Assalamu alaikum, my young learners. Welcome to your English class. I'm your English teacher, and I'm so happy to see you all today. This video lecture is for class 1. Subject is English, and this is lecture number 4. So, let's talk about the contents of this lecture. First, I will give you some important instructions to follow during the lesson. Then, we will have a short introduction to our topic so you can understand it easily. After that, I will explain the objectives of the lesson so you know what you are going to learn today. We will also revise the summary of the lesson that we started in the previous lecture, the message of kindness, to refresh our understanding. Finally, we will practice together by doing exercise A and exercise B. So, my dear students, please stay focused and get ready to learn. So, students, here are some instructions which you have to follow before starting the lecture. Be ready with full concentration. Please take out your books and keep all your stationery items ready. Also, sit under the supervision of your parents or elder sibling. Now, let's move to the introduction of our topic. Today, we are going to talk about unit number 1 of New Oxford Modern English. We will focus on page number 4 and we will do exercise A and exercise B together. So, students, the objectives of this lecture are: first is remembering. Remembering means thinking about what we have already learned. So, you will recall the story and answer the MCQs. Next is understanding. Understanding means knowing the meaning of words. You will read the options and choose the correct one. Then we have applying. Applying means using what you learned. So you will use your knowledge to pick the right answers in MCQs. After that is analyzing. Analyzing means looking carefully. You will look at the words and find the missing letters. Next is evaluating. Evaluating means choosing the best answer. You will select the correct spelling or option. And last is creating. Creating means making something complete. You will complete the words by filling in the missing letters. So let's start and do our best. Now let's read the summary of the lesson, the message of kindness. This lesson teaches that kindness means helping and caring for others. It also tells us that Prophet Muhammad ﷺ showed great kindness to everyone. He was kind to people, children, and even animals. The story teaches us that we should follow his example and be kind, helpful, and polite to others. डियर स्टूडेंट्स, आज का लेसन हमें एक बहुत खूबसूरत मैसेज देता है दैट काइंडनेस इज़ पावरफुल। काइंडनेस का मतलब है दूसरों की मदद करना, दूसरों के साथ प्यार से बात करना और दूसरों की केयर करना। जैसे हमने इस यूनिट में पढ़ा अपने प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि वो हर किसी के साथ मेहरबान थे, वो हर किसी के साथ मेहरबानी के साथ पेश आते थे। वो बच्चों से प्यार करते थे, लोगों की मदद करते थे और यहाँ तक कि वो जानवरों का भी ख्याल रखते थे। अब आप सोचिए स्टूडेंट्स कि हम अपनी डेली लाइफ में काइंडनेस कैसे दिखा सकते हैं? क्या हम काइंड हैं? जैसे अगर आपका कोई फ्रेंड गिर जाए तो आप क्या करेंगे? यू हैव टू हेल्प हिम। अगर कोई उदास हो, आपका कोई बहन भाई, कभी कभी मम्मा भी तो उदास हो जाती है, तो आप कौन से काइंड वर्ड्स हैं जो उनको कह सकते हैं? आप उनको कह सकते हैं, डोंट वरी मामा, आई एम विद यू।
आपके बहन भाई अगर कोई उदास है तो आप उन्हें भी कह सकते हैं, या अगर आपका कोई फ्रेंड है जो कि उदास है तो आप उन्हें भी काइंड वर्ड्स कह के उनका दिल खुश कर सकते हैं। ओके। और अगर घर पे कभी कभी मम्मा को या बाबा को आपकी हेल्प की ज़रूरत होती है तो आप उनकी हेल्प करते हैं, ये भी काइंडनेस में आता है। स्कूल में आप काइंडनेस कैसे कर सकते हैं? यू कैन शेयर योर थिंग्स विद योर फ्रेंड्स, इट shows your kindness. My dear children, always remember one thing, that kind words cost nothing but means everything. जब आप काइंड वर्ड्स यूज़ करते हैं तो इसकी कॉस्ट कुछ भी नहीं होती है, लेकिन यही सब कुछ होता है। ओके। और एक बहुत ही गोल्डन लाइन है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। प्लीज़ रिमेंबर दिस लाइन, दैट जैसा आप दूसरों के साथ करते हैं वैसा ही वापस आपके साथ होता है। अगर आप दूसरों के साथ गुड बिहेवियर रखेंगे, पोलाइटली बिहेव करेंगे, तो दूसरे भी आपके साथ पोलाइट होंगे। अगर आप दूसरों के साथ काइंड होंगे तो दूसरे भी आपके साथ काइंड होंगे। अगर आप दूसरों के लिए हेल्पफुल होंगे तो दूसरे भी आपके लिए हेल्पफुल होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो चीज़ें सिखाई हैं हमें उन्हें फॉलो करना चाहिए। और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे प्यारे प्यारे से बच्चे इस चीज़ को फॉलो करेंगे। ओके। Dear students, now let's talk about what is comprehension. Comprehension means understanding the meaning of something you read. Comprehension का क्या मतलब है कि जो हम पढ़ते हैं उसको समझना। फॉर एग्जाम्पल, जब आपने स्टोरी कोई पढ़ी है, ये जैसे भी हमने जो है विद द मैसेज ऑफ काइंडनेस स्टोरी पढ़ी, अब अगर आपसे उसके बारे में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो अगर आप उसको अंडरस्टैंड कर चुके होंगे तो आप उसका जवाब बहुत ईजिली दे देंगे। तो कॉम्प्रिहेंशन का मतलब भी यही होता है कि जब आपने एक स्टोरी को पढ़ा, उसको अंडरस्टैंड किया, आप उसको समझ गए हो, तो इट मीन्स दैट यू हैव गुड कॉम्प्रिहेंशन। ओके। जैसे फॉर एग्जाम्पल, when a student reads a story and can answer questions, explain the idea, or tell what happened in the story, it shows the student understands it. This understanding is called comprehension. अगर आपको नहीं पता कि स्टोरी के अंदर क्या हुआ, तो इसका मतलब ये है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई। आप कभी भी कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो आप कभी अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर्स होते हैं उनको बेहतरीन तरीके से करने का सबसे बड़ा जो चीज़ है वो यही है, दैट यू हैव टू रीड द स्टोरी विद फुल कंसंट्रेशन। आप उसके जितने भी मेन आइडिया होगा, जो जितनी उसकी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी, आप उसको रिकॉल करेंगे। आप उसको अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप उसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं, ठीक है, ताकि जब आपको उसका आंसर फाइंड आउट करना हो तो आपके लिए उसको फाइंड आउट करना आसान हो जाए। Students, now let's start the exercise of comprehension, and the exercise is choose the right answer. The first statement of the exercise is Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was born in. Option A is Medina. Option B is Morocco. Option C is Makkah. जैसे कि स्टूडेंट्स, अगर आपको स्टोरी याद है, यूनिट याद है, तो आपको बहुत क्लियरली इस बात का पता होगा कि यूनिट के वेरी फर्स्ट लाइन में इट वाज मेंशन्ड दैट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज बोर्न इन मक्का इन अरेबिया। सो द करेक्ट आंसर इज मक्का। तो हम मक्का को जो है वो सर्कल कर देंगे। द सेकेंड स्टेटमेंट इज सादिक एंड अमीन मीन्स ऑप्शन ए helpful and kind. Option B, honest and trustworthy. Option C is caring and nice. स्टूडेंट्स, हमने स्टोरी में जो है ऑलरेडी पढ़ा है और हमें पता है इस बारे में कि हमारे प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी झूठ नहीं बोला। वो हमेशा ईमानदार थे। एंड बिकॉज ऑफ हिज गुड कैरेक्टर लोग उन्हें बहुत पसंद करते थे और इज्जत देते थे। दे कॉल्ड हिम सादिक एंड अमीन। सादिक का मतलब है ट्रुथफुल यानी सच्चा, और अमीन का मतलब है ट्रस्ट वर्दी यानी काबिल एतमाद।
So, children, the correct option is option B, honest and trustworthy. तो प्लीज ऑप्शन बी को सर्कल कर लीजिए. So, students, the third statement is that we should always be dash to one another. And the options are option A, angry, option B, unkind, and option C is kind. जैसे कि स्टूडेंट्स हमने ऑलरेडी स्टोरी में पढ़ा है अपने प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में. और स्टोरी के अंदर हमने ये देखा है कि हमारे प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के साथ, बच्चों के साथ और हत्ता कि जानवरों के साथ भी बहुत ज़्यादा मेहरबान थे. ही ऑल्सो हेल्प द पुअर बॉय. उन्होंने गरीब बच्चे की मदद भी की, उसे कपड़े दिए और उसे खाना भी दिया. ये चीज़ हमें ये सिखाती है कि हमें हमेशा एक दूसरे के साथ काइंड रहना चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए. तो आप यकीनन आंसर तो आपने गेस कर लिया होगा कि इसका आंसर क्या होगा करेक्ट. दैट वी शुड ऑलवेज बी काइंड टू वन अनदर. एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. तो प्लीज़ ऑप्शन सी को सर्कल कर लीजिए. Dear students, now let's start a new topic called working with words or missing letters. So, first, let's talk about what are missing letters. A missing letter is a letter that is not in the word. So, let's talk about मिसिंग लेटर क्या होता है. मिसिंग लेटर समटाइम्स जब एक वर्ड उसके अंदर से कोई लेटर मिस हो और वो इनकम्प्लीट हो, दैट इज़ कॉल्ड कि ये मिसिंग लेटर है. कोई लेटर उसमें से मिस होता है, कोई लेटर उसमें से गायब होगा. ओके, जिससे जो है वो पूरा वर्ड नहीं बन पाएगा. तो वी हैव टू थिंक वेरी केयरफुली एंड क्रिटिकली कि कौन सा लफ्ज़ है जो कौन सा लेटर है जो उस वर्ड में से गायब है. जैसे कि एग्जांपल यहाँ दी गई है C-T. ओके, नाउ यू हैव टू थिंक वेरी केयरफुली कि यहाँ पे हम कौन सा लेटर लगाएंगे कि ये एक मीनिंगफुल वर्ड बन जाएगा. ओके, तो सोचिए ज़रा कि हम कौन सा लेटर यहाँ लगाएंगे. C-A-T. क्या बना बच्चों? राइट इन द कमेंट सेक्शन कि क्या लफ्ज़ क्या बनेगा. द वर्ड विल बी कैट. वेरी वेल डन. Dear students, in this exercise, the words are taken from the unit you have already read. So these words will be familiar to you. Each word has one missing letter. So you need to think carefully and fill in the correct letter to complete the word. Read the word slowly, look at the letters that are already there, and then decide which letter is missing. After you find the missing letter, write it in the blank space to make the correct and complete word. So, let's have a look on the first word. The first word is H dash L P FUL. हमने इस यूनिट में कितनी बार इस बात को बार बार रिकॉल भी किया है, डिस्कस भी किया है कि हमारे प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टुवर्ड्स पीपल क्या थे. थिंक, सोचिए क्या हो सकता है. What is the letter missing in this word? And the letter is E. Very well done students. हम इसमें E लगाएंगे और word क्या बनेगा? Helpful. Very well done. And the second word is CA-EL. सोचिए, ये भी तो एक वर्ड है जो कि यूनिट से ही उठाया गया है. आप इसके बारे में सोचेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये क्या वर्ड है. यस, वेरी गुड. द मिसिंग लेटर इज M and the word is camel. The third word is K-N-D. आपको वर्ड्स याद हैं? ये सारे के सारे वर्ड्स वो हैं जो कि यूनिट से ही लिए गए हैं. आपको फ़ौरन क्लिक कर गया होगा कि यहाँ पे ये कौन सा वर्ड आता है, क्योंकि अभी हमने पीछे जो एक एक्सरसाइज की है MCQs की, उसमें एक लास्ट ऑप्शन था यही वर्ड. यस, दैट इज़ काइंड. और जो मिसिंग लेटर यहाँ आएगा वो क्या आएगा? I. And the word is kind. Very good, boys. So the next word is
dash HILD, and the missing letter is C. और word क्या बनेगा? Child. Very good. The next word is MADI-A. Yes, yes, boys. Think. What can be the letter? Yes, it's N. Okay, and the word is Medina. मेरे साथ आप भी इसको read करेंगे. The word is Medina. Okay, the next word is dash ATHER. It's very easy, boys. Very easy. The last two words are very easy. Now think what it can be. Yes, it's father, and the missing letter is F. Very good. Okay, and the last word is MO dash HER, and the missing letter is yes, T. T. The missing letter is T, and the word is mother. Very well done, boys. Very well done. Now, students, let's recall our lecture and what we learned today. Dear students, today we learned two important things. First, we talked about comprehension. And what is comprehension? Comprehension means to understand what we read. When we read a story and we know what the story is about, it means we understand it, and if we can tell the story or answer questions, it shows our comprehension. Then we learned about missing letters. What are missing letters? Yes, missing letters are that sometimes a word is not complete because one letter is missing. We have to look at the word, think carefully, and add the correct letter to make the word complete. For example, the same example जो मैंने पहले आपसे डिस्कस की, if we see C dash T, तो आप you have to think कि what word will come in this space. That is A, and the word will become cat. We think and add the letter A to make the word cat. Yes. So today we practiced reading, thinking, and completing words. I hope you understood today's lesson. Now it is time for your homework. Students, you have to complete exercise A and exercise B in your books. Also learn the missing letters by practicing them again and again. Do your work neatly and carefully. Now it is time for your homework. Students, you have to complete exercise A and exercise B in your books. Also learn. Thank you. Take very good care of yourself and see you soon. Thank you. Take very good care of yourself and see you soon.